All right, let us begin. Hi everyone, my name is Upasna Luthra and I'm Verbal Ability and GDPI trainer. And I've started this article dive live series so as to help you understand difficult texts in English language. Okay, so this is useful for number one, those students who are aspiring for CAT and other management entrance tests, right? So for those students, since reading comprehension comes from a diverse, fields of topics, so that's why these sessions will help you understand or build a basic understanding of those topics, so that when you sit for the test you don't feel that you don't know about anything about these passages. All right. Apart from CAT and other exam aspirants, this is also helpful for those students who are trying to, improve their language skills in general, because this is something, which is going to improve your vocabulary, grammar, and comprehension, right? So this is really powerful for you. Okay, then let's begin. So every week this will be conducted on Tuesdays, Thursdays, and Saturdays, right? And there'll be a weekly theme. This week's theme is science, right? And I'll be reading another article on science today, right? So this is the article that we'll be reading. I have mentioned the source here that this is from Discover magazine. Okay, so let's say that quote that I always ask you to say whenever you are trying to read something, whether it is an exam or just any reading material. So that is, let's get to know something new about this world. Okay, chaliye. Right. Mewing may be trendy, but it has no scientific basis. So this is a very trendy thing these days. It's really popular. Okay, it's called mewing. Let's get to know what this is. Okay. The controversial online craze promises to give you a chiseled jawline and improve your health, but experts remain skeptical. Now, in this sentence, there may be three words which may be, new for you. One is chiseled, okay. One is skeptical, and one is controversial. Okay, so if you're not aware of this, then it will be difficult for you. So what this line means is that there is this online trend that is going on, which is debated. Some people say that it's good, some people say it's not good, and it promises to give you a chiseled jawline. As you can see in the picture, chiseled means well formed, without any fat, or sculpted, right? And experts remain skeptical, matlab ki experts don't really believe in this, they have their doubts. Okay, doubtful, right? So it's hard to keep up with the latest fads and wellness crazes. What are fads? Fads are basically short-lived trends which come and go for a while. But a new online trend, mewing, is sweeping social media and attracting a lot of attention. So there is a new trend, mewing, and it is very popular across all social media platforms, and it is really attracting a lot of viewers. Okay, more than just a new slang term. What is slang? Slang is basically a term which is used informally. So not proper formal English language, but slang is more colloquial. Okay, bol chal wali bhasha mein, right? Okay. So more than just a new slang term, mewing describes a quick fix method for facial reconstruction meant to make an individual's jawline look tighter and more sculpted, among other benefits. So ये जो mewing technique है ये क्या promise करती है that it's going to हेल्प यू स्कल्प्ट योर फेस, आपके फेस की शेप को ये उस तरह से बना देगी विच यू लाइक, है ना? जॉ लाइन, अगर आपको शार्प जॉ लाइन चाहिए, इट लुक टाइटर एंड स्कल्प्टेड. Plus, it has other benefits. The phenomenon has surged on social media platforms like TikTok, where influencers post how to videos that attract hundreds of millions of views. Now, in India, we don't have access to TikTok, but other social media platforms, and this is quite in trend these days, mewing. You can look it up online.
Okay, so mewing is very popular and influencers are posting how to do this technique videos, and it's millions, hundreds of millions of people are watching that. Yet, despite mewing's popularity and its purported benefits as a panacea to a host of modern woes, it's not quite the silver bullet that its proponents claim. ओके, पहले यहाँ तक रीड करते हैं. सो देर आर मेनी गुड वर्ड्स, बी रेडी टू नोट डाउन. फर्स्ट इज परपोर्टेड. परपोर्टेड मतलब कि जो क्लेम किए जा रहे हैं पर उनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है. सो अलेजेड इज ऑल्सो अ सिनोनिम फॉर दिस. परपोर्टेड मतलब इट्स जस्ट ऑन पेपर और दे आर जस्ट क्लेमिंग इट. ठीक है. पनाशिया क्या होता है? अ क्योर ऑल. पनाशिया मीन्स हर बीमारी की दवाई, कोई एक ही दवाई विच क्योर्स एवरीथिंग. ओके. अ होस्ट, यहाँ पे होस्ट का क्या मीनिंग है? नाउ यूजुअली व्हेन वी से होस्ट इट मीन्स कि समवन इज होस्टिंग अ पार्टी और समथिंग, है ना? बट हेयर होस्ट मीन्स अ लॉट ऑफ, many. Okay, so you can underline this and say that it can use for many also. Okay. देन मॉडर्न वोज. वोज क्या होते हैं? परेशानियां, डिफिकल्टीज, एलिमेंट्स, तकलीफें. ओके. सिल्वर बुलेट मतलब अ क्विक फिक्स फॉर अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, दैट इज सिल्वर बुलेट. एंड प्रोपोनेंट्स. प्रोपोनेंट्स मतलब जो किसी चीज को प्रपोज से आप इसको याद कर सकते हैं. प्रोपोनेंट्स होते हैं हु आर इन फेवर ऑफ समथिंग, जो किसी चीज का प्रचार करते हैं ना, हु से दैट ओके लेट्स फॉलो दिस थिंग, राइट? Oral surgeons and dental experts caution that there's no evidence to support claims that it can reshape jaw structure and appearance or improve sleep and breathing. So, oral जो experts हैं, dental experts हैं, they say that ऐसा कोई scientific evidence नहीं है which tells us कि mewing can restructure your face or jaw and improve sleep and breathing. Okay, next. Social media is a powerful tool for informing the public in many subject areas, including mewing. So, social media बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें बताता है, including mewing, but it is not regulated by experts. But social media, it यहाँ पे social media के लिए लगा है, ठीक है, not mewing. पर जो social media, it's not regulated by experts. Social media पे experts की राय तो हमें नहीं पता चलती है ना? Said Myron Gaiman, president of the American Association of Orthodontists, in a press release. Now, who are orthodontists? Orthodontist, dent uska lag raha hai na. So orthodontists are basically doctors who help in aligning your teeth. अगर आपके टीथ अलग अलग मिसअलाइंड हैं या जॉ की स्ट्रक्चरिंग उस तरह से है ना, सो जो दांतों को प्रॉपर अलाइन करवा देते हैं ना, in their proper place at proper angle, they use braces and other techniques. So those are orthodontists. Unfortunately, many members of the public quickly fall prey to theories that have not been scientifically tested. So गायमन क्या कह रहे हैं कि बहुत से लोग जो होते हैं, they fall prey मतलब उसके बहकावे में आ जाना या to be caught up in something which is not true. Okay. सो बहुत से लोग इस उसमें आ जाते हैं बात में कि म्यूइंग इज गुड, वेयर एज इट इज नॉट साइंटिफिकली टेस्टेड. व्हाट डज म्यूइंग मीन? तो आप बता रहे हैं कि मीनिंग क्या है म्यूइंग का. बिफोर वी बिगिन, जस्ट व्हाट इज म्यूइंग एंड व्हाई हैज इट टेकन द इंटरनेट बाय स्टॉर्म इन recent years? So they are asking why has it taken the internet by storm. You can note this phrase, टेकिंग समथिंग बाय स्टॉर्म, मतलब कि किसी चीज को बहुत ज्यादा कहीं पॉपुलर हो जाना, टू stir up a lot of activity somewhere. So it has taken the internet by storm. If you've ever wanted to correct a misaligned jaw, then conventional wisdom would point you toward an orthodontist. अगर आपके नोन में आपको खुद को misaligned jaw की problem है, so usually the first thing which comes to mind is let's go to an orthodontist. But to the mewing enthusiast, a transformational change can be made simply by changing how their tongue is positioned in their mouth. तो अब बता रहे हैं कि म्यूइंग क्या है टेक्निक, that it plays on the position of your tongue in your mouth. How it should be? It is pressed to the roof, accompanied by nose breathing. So
म्यूइंग टेक्निक क्या कहती है कि आपको अपनी टंग को रूफ ऑफ द माउथ से प्रेस करना है, रूफ ऑफ द माउथ पर प्रेस करना है, एंड यू हैव टू ब्रीथ थ्रू योर नोज इंस्टेड ऑफ ब्रीदिंग थ्रू माउथ. ओके. डिस्पाइट द हाइप सराउंडिंग म्यूइंग, हाइप मतलब जो इतना इस चीज को हाइप कर दिया है, क्रेज कर दिया है इस चीज का, है ना, इसको इतना एम्प अप कर दिया है. So, there's no research supporting it as an alternative treatment to orthodontics or jaw surgery, according to a 2019 paper published in the Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. So, एक पेपर पब्लिश हुआ था इस जर्नल में 2019 में, which says कि इसको हम एक alternative treatment की तरह नहीं ले सकते. Okay. If you have misaligned jaw, then you need orthodontics or jaw surgery, according to this paper. John Mew, an English orthodontist, founded mewing and named the technique after himself. अब इसका originate कहाँ से हुई है ये टेक्निक वो बता रहे हैं, origin बता रहे हैं. This technique was actually created by John Mew and he named it after himself, mewing. Okay. His son Michael Mew has popularized it today. So इसको popularize करने में Michael Mew का हाथ है, who is John's son. The Mews are proponents of orthotropic intervention, which treats misaligned bites and jaws by changing the posture of both the mouth and the head. तो ये जो म्यूइंग टेक्निक है वो किस चीज का यूज करती है? ऑर्थोट्रोपिक इंटरवेंशन. ऑर्थोडोंटिक्स इज टू वर्क ऑन योर टीथ. ठीक है, टीथ की मिसअलाइनमेंट पे वर्क करना. वेयर एज ऑर्थोट्रोपिक इज मच वाइडर. उसमें क्या करते हैं कि पूरा आपका फेस एंड हेड का, इन योर पोस्चर इन जनरल, माउथ का, है ना, ऑल दोज थिंग्स आर वर्कड ऑन इन ऑर्डर टू ट्रीट द सेम थिंग. तो बेसिकली ऑर्थोडोंटिक्स एंड ऑर्थोट्रोपिक्स बोथ आर ट्रीटिंग द सेम थिंग, लेकिन ये दोनों का मेथड अलग है. ओके. The Muse also assert that Western society's consumption of increasingly soft foods, as well as the rise in allergies, have led to underdeveloped jaws and increased mouth breathing compared to our ancestors. अब यहाँ पे हमारे लिए काम की बात है, as if you want to improve your health in general. So this is a good takeaway for us कि हम ज़्यादा soft foods consume कर रहे हैं. So what can be hard foods? Hard foods would be raw fruit or raw vegetables, salad. Okay, those are hard to bite and chew. Okay, so we need that more of chewing action with our jaws. Okay, and mouth breathing ko consciously we need to monitor. If you are in general throughout your day breathing more through your mouth, then that is not good for your health. You should consciously monitor your breathing and see whether you are taking in breaths through your nose or through your mouth. Okay. Mewing, which involves proper tongue posture and breathing through the nose, is an attempt to rectify this discrepancy and restore our faces to their former chiseled glory. तो ये लाइन क्या कह रही है कि जो म्यूइंग है वो इन दोनों चीज पर वर्क करती है, कि जो हमारी टंग का पॉस्चर है, ठीक है, और ब्रीदिंग थ्रू द नोज हमें बताती है. और इसका बेनिफिट क्या होता है? दैट इट ट्राइज टू रेक्टिफाई दैट कि हम ज़्यादा सॉफ्ट फूड्स कंज्यूम कर रहे हैं और एलर्जीज भी हो गई हैं. ठीक है, तो हमारे जॉज अंडर डेवलप्ड रह गए हैं. तो उस चीज़ पर म्यूइंग हेल्प करती है, उस चीज़ पर वर्क करती है, एंड दैट विल हेल्प अस टू रिस्टोर आर जॉज एंड फेसेस टू देयर फॉर्मल चिजल्ड ग्लोरी. मतलब जैसे पहले हमारे एंसेस्टर्स के एकदम चिजल्ड जॉ होते थे, उस तरह के जॉज हमें मिल जाएंगे. ओके. फॉर्मर ग्लोरी मतलब कोई चीज जो पहले बेटर थी. ओके, राइट. नेक्स्ट, हाउ म्यूइंग क्लेम्स टू वर्क. तो अब म्यूइंग वर्क कैसे करती है? टू एंगेज इन म्यूइंग वन मस्ट सिंपली क्लोज देयर माउथ एंड अटेम्प्ट टू ले द मेजॉरिटी ऑफ देयर टंग अगेंस्ट द रूफ ऑफ द माउथ. तो आपको म्यूइंग अगर करना है, you can also look up some how to videos on this. ठीक है, I would suggest. But in this article what is mentioned is कि आपको अपना माउथ क्लोज करना है और कोशिश करना है कि जितना मैक्सिमम आपकी टंग है वो आपके रूफ ऑफ द माउथ को टच करे. ओके. द टिप ऑफ वंस टंग शुड बी बेयरली टचिंग द फ्रंट टीथ. और जो टिप है, बिल्कुल जो हमारी बिल्कुल फ्रंट मोस्ट पार्ट है ऑफ द टंग, दैट शुड बेयरली टच द फ्रंट टीथ. वो हमारे जो ऊपर के दांत हैं उनको बेयरली टच करना चाहिए.
Okay, depending on which internet source one derives instructions from, the tongue may be held in place by either suction, achieved by swallowing to generate a partial vacuum, or by pure muscle power. The latter is termed as hard mewing. तो अगर आप अलग अलग इंस्ट्रक्टर्स को फॉलो कर रहे हैं अबाउट म्यूइंग, so some would recommend that you use suction and swallowing टेक्निक, जिससे एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा माउथ में और वो टंग वहां पे चिपक जाएगी, ठीक है। और सम में रेकमेंड कि प्योर अपनी मसल पावर को यूज करके यू जस्ट कीप योर टंग स्टक टू योर रूफ ऑफ द माउथ, ठीक है। और जो ये यूजिंग मसल पावर वाला है, दिस इज कॉल्ड हार्ड म्यूइंग। ओके, mewing can be performed in short bursts of around 20 seconds to properly engage the jaw muscles, but others advocate for a 24/7 lifestyle change. So, कुछ लोग कहते हैं कि म्यूइंग आप कैसे कर सकते हो, एट अ टाइम 20 सेकेंड्स का सेट कर लो, 20 20 सेकेंड्स के लिए आप ये कर सकते हो। डू इट फॉर 20 seconds, देन टेक अ ब्रेक, देन अगेन 20 seconds, टेक अ ब्रेक, 20 seconds, टेक अ ब्रेक, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म यूइंग, बट सम अदर पीपल से एडवोकेट, मतलब वो ये प्रपोज करते हैं कि इसको आप एक 24/7 हैबिट बना लो। जब जब आपको याद आए या कॉन्शियसनेस में आए, सो यू प्रैक्टिस दिस, unless talking or eating. The only two exceptions for mewing are बात करते हुए या खाना खाते हुए। इन दोनों टाइम पर आपने म्यूइंग नहीं करना है, एंड इट कैन नॉट बी डन, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल व्हेन यू आर यू नो in your routine, you can practice this, which should be done with an emphasis on chewing the food for longer to engage the muscles. और जब खाना खाना है तो इंडिया में हमें हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाने को 32 बार चबाओ, 32 is 32. So basically, I don't know what the scientific reason behind that is, but it's said that we have 32 teeth and chew it for at least 32 times, ठीक है। सो बेसिकली द टेक अवे फॉर अस फ्रॉम हियर इज कि जितना ज़्यादा आप चू करोगे फूड को उतना अच्छा होगा। सो जैसे कि एकदम पानी की तरह बना लेना चाहिए खाना हमें मुंह में, है ना। सो दैट इज द कन्वेंशनल विजडम। सो chew more, okay, so as to engage the muscles. Mewing proponents say that one ought to be always practicing, कि म्यूइंग वाले क्या कहते हैं कि इसे हर वक्त प्रैक्टिस करते रहो, बस खाते हुए और बात करते हुए नहीं करना, खाते हुए च्यू ज़्यादा करो, जस्ट मे बी नॉट व्हेन दे आर आउट इन पब्लिक। और जब आप पब्लिक में हो तो म्यूइंग ऑफ कोर्स जब करोगे तो थोड़ा सा ऑड लगता है फेस, है ना, करते हुए। सो म्यूइंग, डोंट डू इट इन पब्लिक और मीटिंग्स या कहीं ऐसी जगह पे। ओके, द म्यूइंग कंट्रोवर्सी, तो अब आते हैं कि इसके पीछे कंट्रोवर्सी क्या है। With these simple tenets in mind, it's no wonder that the recommendation soon entered the mainstream. कि जब टेनेट्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स या रूल्स, ठीक है, कि ये जो रूल्स हैं, सिंपल रूल्स है ऑफ म्यूइंग के, कि उससे क्या हुआ कि जल्दी ही ये बहुत पॉपुलराइज हो गई, इट एंटर्ड मेन स्ट्रीम। Rather than receiving expensive braces or undergoing invasive surgery, believers in the practice were promised a more defined jawline so long as they remained dedicated to the habit. अब ऑफ कोर्स कौन नहीं चाहेगा कि उसे ज़्यादा खर्चा किए बिना या कोई इन्वेसिव सर्जरी कराए बिना बेनिफिट मिल जाए, है ना। तो दिस म्यूइंग टेक्निक प्रोमिसेस कि अगर आप ये हैबिट करते रहोगे कॉन्टिन्यूसली तो आपकी जॉ लाइन अपने आप ठीक हो जाएगी। ओके, जो भी आपको टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम है, मिसअलाइनमेंट की प्रॉब्लम है, दैट विल ऑल बी सॉर्टेड आउट once you practice this as a habit, and you won't need any expensive braces or surgery. As mewing became more prominent, so too did claims that it could cure other ailments like speech disorders and even sinusitis. So अब देख रहे हैं कि जब म्यूइंग इतनी पॉपुलर होने लगी, ठीक है, प्रोमिनेंट इज इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर, तो उसके साथ साथ उसके रिजल्ट्स और निकल के आने लगे। अब लोगों ने और क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि म्यूइंग से तो ये भी फायदा होता है या म्यूइंग से ये भी चीज़ क्योर होती है। तो सम ऑफ द एग्जांपल्स आर स्पीच डिसऑर्डर्स या साइनसाइटिस। स्पीच डिसऑर्डर क्या होते हैं, बहुत से लोगों को बोलने में प्रॉब्लम होता है। some of the common disorders are when you are not able to pronounce certain sounds, आप कुछ sounds नहीं बोल पा रहे हो, या बहुत fast बोल रहे हो या धीरे बोल रहे हो,
स्टैमर कर रहे हो, ठीक है। सो ऑल दोज आर टाइप्स ऑफ स्पीच डिसऑर्डर्स। तो म्यूइंग धीरे धीरे ये क्लेम करने लगी कि इट कैन क्योर स्पीच डिसऑर्डर्स एंड इवन साइनसाइटिस। ओके, of course, mewing has another side beyond the purported health benefits. Mewing के जो ये हमें purported मतलब वही proposed, which are alleged but not scientifically proved. So ये जो mewing के benefits हैं उसके beyond भी there is a story. Some internet communities view mewing, among other unorthodox beauty hacks, as a key component of looks maxing, defined as the quest to become more conventionally attractive. सो दूसरा पर्पस क्या है म्यूइंग का, वही चिजल जॉ लाइन की, हम एकदम तीखी शार्प जॉ लाइन चाहिए, वी डोंट वांट दैट चबी जॉ लाइन। तो कुछ लोग इसको एज अ पार्ट ऑफ लुक्स मैक्सिंग भी फॉलो कर रहे हैं। लुक्स मैक्सिंग क्या होता है? बेसिकली अ बिलीफ, अ सिस्टम वेयर यू वांट टू बिकम मोर अट्रैक्टिव, ठीक है, जैसा मीडिया में पोर्ट्रे किया जा रहा है, जो ब्यूटी की डेफिनेशन है, दैट यू हैव टू बी अ सर्टेन हाइट, सर्टेन कलर, सर्टेन वेट, सर्टेन शेप, ठीक है। So that is looks maxing. That pursuit is popular among internet subcultures and mainly among teen boys, as reported by the New York Times, that hold dogmatic and extremist beliefs regarding attractiveness in dating. So internet में कुछ parts, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ groups ऐसे, some subcultures which believe in these dogmatic या extremist beliefs, जो कहते हैं कि नहीं इसी चीज को फॉलो करना है। हेयर डॉगमेटिक मीन्स कि समथिंग विच इज नॉट प्रूवन अगेन, बट इट इज बिलीव्ड कि नहीं ऐसा होगा, थियोरेटिकल है ये बट नॉट प्रूवन। ओके, सो डॉगमेटिक हेयर मीन्स दैट। तो कुछ सब कल्चर्स ऐसे हैं जो इन चीज़ों में बिलीव कर रहे हैं एंड दे वांट कि हमें इस तरह की लुक्स मिले, इस तरह की ब्यूटी मिले। और उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट कौन है? टीन बॉयज, ठीक है। Beyond mewing, looks maxing may entail a cocktail of other practices such as a range of plastic surgeries or the harmful act of bone smashing, wherein one repeatedly whacks their face with a hard object in an attempt to realign the bone structure. सो लुक्स मैक्सिंग में एक तो म्यूइंग था, अब लुक्स मैक्सिंग पे आ गया है ये, है ना, पैराग्राफ। दिस इज टॉकिंग अबाउट व्हाट अदर थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ दिस लुक्स मैक्सिंग। तो उसमें क्या क्या है? प्लास्टिक सर्जरीज करवाते हैं लोग। सम पीपल ऑल्सो डू दिस बोन स्मैशिंग। बोन स्मैशिंग क्या होता है कि किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से अपने फेस पे रिपीटेडली मारना, वैक मतलब मारना, ठीक है, इन ऑर्डर टू रियलाइन द बोन स्ट्रक्चर। प्लीज डोंट फॉलो दिस, नेवर फॉलो दिस, ठीक है। इफ दिस साउंड्स अनप्लेजेंट एंड अननेसेसरी, इट्स बिकॉज इट इज। तो ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा अनप्लेजेंट और अननेसेसरी है, with experts cautioning against any sort of attempts. So experts totally मना करते हैं कि बिल्कुल नहीं करना बोन स्मैशिंग, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज साइंस से अबाउट म्यूइंग? साइंस क्या कह रही है म्यूइंग के बारे में? विद ऑल ऑफ दीज अनसेवरी एसोसिएशंस इन माइंड, अनसेवरी मतलब जो अच्छी नहीं है। सेवर यूजुअली इज यूज्ड विद इन रेफरेंस टू टेस्ट, खाने के रिलेटेड ना, सेवरी, टू सेवर द मोमेंट, सेवर द फूड, ओके, इंजॉय करने के लिए। तो अनसेवरी का यहाँ पे क्या मीनिंग है? अनप्लेजेंट, कि म्यूइंग के साथ कितनी सारी अनप्लेजेंट बातें भी एसोसिएटेड है। डज म्यूइंग हैव एनी सॉर्ट ऑफ वैलिडिटी, कि क्या एक्चुअल में म्यूइंग वैलिड है? डज इट हैव एनी वैलिडिटी? एज इट टर्न्स आउट, द म्यूज माइट बी पार्शली राइट अबाउट द इम्पैक्ट टंग posture हैज ऑन फेशियल डेवलपमेंट। तो इसमें कुछ हद तक तो सच्चाई हो सकती है, दे मे बी पार्शली राइट, ठीक है, कि कैसे टंग को एक प्रॉपर पोजिशन में रखने से हमारे फेस की डेवलपमेंट में फर्क पड़ता है। According to a 2020 study published in Bioscience, jawlines have been shrinking in the past few decades. कि पिछले कुछ डेकेड से, डेकेड इज अ ग्रुप ऑफ 10 years, ठीक है, सो स्पैन ऑफ 10 years, पिछले कुछ डेकेड से हमारी जो जॉ लाइन है वो श्रिंक होती दिख रही है। द रिसर्चर्स बिहाइंड द स्टडी recommended chewing harder foods as well as swallowing and breathing exercises to compensate. तो रिसर्चर्स क्या कह रहे हैं कि हमारा बाय बर्थ अगर जॉ लाइन श्रिंक हो रही है, ठीक है, ओवर द डेकेड्स, तो रिसर्चर्स ने उसको कॉम्पनसेट करने का क्या मेथड दिया है? दैट यू फॉलो सम
swallowing or breathing exercises, and also chew harder foods. वही raw salad, raw fruit खाइए. Okay, that doesn't mean, however, that mewing's purported benefits aren't distorted. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये बेनिफिट्स बताए गए हैं म्यूइंग के, ये डिस्टॉर्टेड नहीं है. नाउ सी, दिस हैज डबल नेगेटिव हियर. डजंट मीन बेनिफिट्स आरंट डिस्टॉर्टेड. मतलब ऐसे सेंटेंसेस को पढ़ने के लिए क्या किया करो, मैथ्स की टेक्निक थी जो इंटीजर्स में यूज करते थे बचपन में, minus minus plus. Okay, that can make your life really easy. I really follow this and recommend this. मैं बचपन से ही यूज करती हूँ. So that mean, तो क्या बन जाएगा, that means that mewing's purported benefits are distorted. मतलब कि जो म्यूइंग के alleged claimed benefits हैं वो distorted हैं, उनमें गड़बड़ है. The notion that simply pressing your tongue up to the roof of your mouth will transform your face is unfounded and can result in unforeseen harm, like disrupting tooth alignment or worsening existing speech issues and bite problems, requiring additional treatment to fix. So क्या कह रहे हैं कि notion, ये idea, ये belief कि simply tongue को press करने से at to the roof of your mouth आपका face transform हो जाएगा, it is unfounded. मतलब इसका कोई evidence नहीं है, और इससे बल्कि कोई अनफोर्सीन हार्म भी हो सकता है जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, दैट इज अनफोर्सीन. सो देयर कैन बी सम हार्म एज वेल, जैसे कि डिस्ट्रप्टिंग टूथ अलाइनमेंट, आपके टूथ की टीथ की अलाइनमेंट खराब हो सकती है, ठीक है. एग्जिस्टिंग स्पीच इश्यूज जो आपको हैं वो और प्रॉब्लम हो सकते हैं, बाइट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है. और फिर इससे आपको एडिशनल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा जाके डॉक्टर के पास. John Mew lost his dental license due to the controversy surrounding mewing, and Michael Mew was ousted from the British Orthodontic Society for similar reason. तो अब इन दोनों के साथ क्या हुआ, जिन्होंने म्यूइंग को बनाया और प्रचार किया, जॉन म्यू का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया बिकॉज ऑफ दिस, एंड माइकल म्यू को आउस्ट मतलब निकाल देना, ठीक है. सो आउस्ट कर दिया उनको फ्रॉम द ब्रिटिश ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी. Notably, the American Association of Orthodontists also does not support the practice as a de facto solution. तो जो ये AAO के एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, दे ऑल्सो से कि इस प्रैक्टिस को मत फॉलो करो. Okay, if you're interested in repositioning your jaw, the AAO writes, your best bet is still consulting with a licensed orthodontist. कि अगर आपको सच में अपना जॉ ठीक करना है, रिपोजिशन करवाना है, so you must consult an orthodontist. While proper tongue posture plays a role in oral health and development, mewing oversimplifies the complexities of facial structure. कि हालांकि टंग का पोस्चर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ओरल हेल्थ एंड डेवलपमेंट में, सो यू कैन probably consider a licensed doctor to ask how to place your tongue normal while resting, ठीक है. तो उनसे आप पूछ सकते हैं, राइट. बट ये जो म्यूइंग टेक्निक है ये ओवर सिंप्लीफाई कर देती है. ओवर सिंप्लीफाई मतलब कि कोशिश करती है कि हम एक बहुत सिंपल सी टेक्निक दे दें फॉर अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग लाइक फेशियल स्ट्रक्चर, तो जबकि इतना सिंपल किया नहीं जा सकता. सो हेयर बेसिकली इट्स क्रिटिसाइजिंग म्यूइंग टेक्निक, said Gaiman. तो ये Gaiman का कहना है. There's no scientific evidence to support its claim of reshaping the jawline, and the potential risks outweigh any unproven benefits. तो Gaiman एंड में हमें क्या सलाह देते हैं कि इसके जो बेनिफिट्स क्लेम किए जा रहे हैं, which have not been proven in any way, can definitely be outweighed by the potential risk, कि आपको बहुत से नुकसान हो सकते हैं म्यूइंग फॉलो करने से, ठीक है, rather than any benefits. Okay, so this was the article that we read about mewing technique, and I hope that you learned something new about this world. And always know that whenever there are fads like this or trends like this, you must take science into account. आपको ज़रूरी है कि उसकी डेप्थ में जाइए, साइंटिफिकली उसको स्टडी करिए, स्पेशली वर्कआउट रिलेटेड बहुत सारे ट्रेंड्स आते हैं कि इस तरह से करो, उस तरह से. सो यू मस्ट ऑलवेज बी वेरी वेरी cautious when following one of these trends. All right, then, that was it for the session today. I hope you learned something, and we'll meet in the next session. Bye bye.